बहुत बहुत मेहरबानी। सिर्फ दो छोटिया छोटिया गल्लां इन्होंने डॉक्टर क्या होना है कि उत्थे सारा हैरिटेज कायम है, लेकिन उन साढ़े के हाथ आ गया, सोना जाना शुरू हो गया है। भाई कुलदीप सिंह जी बैठे ने, आई थिंक ही विल स्पीक ऑफ दैट समवेयर एंड टेक केयर ऑफ दैट कि सोना जाना शुरू हो गया है। इस करके उन्होंने हैरिटेज को कितना बचा सकना कि कितना नहीं। दूसरा मैंने गल की कि पोलिटिकल स्पीचां भी शुरू हो गई हैं। सो लैट अस होप फिर साढ़े मान साहब गल कर रहे थे उत्थे माता सुंदरी कॉलेज कि कम से कम एक चीज़ इस 505 साल जरूर पॉजिटिव हुई है, वो करतारपुर तक खुलना। सो लेट इट बी, असी तो भी उम्मीद करके चल रहे थे क्वार्टर ऑफ पीस बंदरवाल किले ना गिरे, पर एटलीस्ट देयर इज सम होप। तो हुण पहला जो सैशन सी सो कार्ड रिलीजियस पार्ट ऑफ वो दी समाप्ति है। सेक्रेटरी साहब चले गए अपने टाइम से। आई हैंड ओवर इट टू द प्रेसिडेंट, नाउ ही हैज टू कंडक्ट द प्रोसीडिंग। जो 84 के जेनोसाइड के बारे आप याद करते हैं, शायद कोई गुरु नानक नाम निवासी को जिसे हंजू अखर तो नाम दिया जो कौम के नाल वापरी उस वक्त अज तक कौम लड़ाई लड़ रही है कि सानू जस्टिस मिले, जस्टिस मिले, जस्टिस मिले। उस दे विच सब तो बड़ा माइलस्टोन सानू मिले हो वो है सज्जन कुमार जी की कन्विक्शन, जरा कि की पिन सेगा पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी दे विच मेजर किलिंग्स होईयां सीगियां। सुल्तानपुरी एरिया, मकबूलपुरी एरिया, नांगलो एरिया, जरा चौके दिल्ली का एरिया से ऑलमोस्ट 14 मिलियन पीपल वर किल्ड इन दिस एरिया। दास नूं इन्हां केसां विच सेवा करन दा मौका सब तो पहला 2009 दे विच मिलिया जदों सज्जन कुमार की एंटीसिपेटरी बेल हाईकोर्ट तो ग्रांट हो गई। आप सुप्रीम कोर्ट गए विक्टिम से बिहाफ पे, दास नूं उनका साहब ने मौका बख्शिया, उन्होंने कहा कि सानू सेवा चाहिए, तुसीं नाल मेरे वास्ते इस तो वड्डा कोई वड्डा भाग नहीं हो सकता सी कि मैं कौम दे कुछ काम आ सका। एंटीसिपेटरी बेल असी वेमेंटली अपोज की थी। असी जजां नूं दस्सिया कि की हालात ने किस तरह का इस बंदे का कॉन्डक्ट रहे, एदी कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रोफाइल देखो, स्पीचेस देखो, जिस तरह जाके बंदा मॉनिटर कर रहा है फ्रॉम डे 1, 1 नवंबर 2 नवंबर, जेडे फर्स्ट नूं रह गए सैकेंड उन्होंने घर के विच इन्होंने बार्जन किया और अल्टीमेटली जेडे बच्चे से इन्होंने इंश्योर किया कि कॉन्स्टिट्यूएंसी दे विच कोई सिख नहीं जिंदा रह जाना चाहिए। That was the kind of brutality which we brought to the notice of the court। the one which मैं just ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਰੀਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ 84 ਤੋਂ 2019 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਟਨੈਸਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਲਿਓਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। 35 ਸਾਲ ਉਹ ਖੜੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ सरकार ਦੀ, प्रोसीक्यूशन सरकार का, विक्टिम्स इस पासे खड़े होकर पीट करते सी कि साडे नाल ऐ होया, सानू जस्टिस चाहिए। इस तो वड्डा जेनोसाइड, इस तो वड्डा मैसाकर नहीं हो सकता हिस्ट्री दे विच। अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन ही वाज कंपेल्ड टू जॉइन द इन्वेस्टिगेशन। अदरवाइज इन्वेस्टिगेशन तक ज्वाइन करके वो बंदा ही वाज रनिंग अवे फ्रॉम टाइम टू टाइम। हर स्टेज पे उन्हें यही कोशिश किया कि मैं अपीलेट कोर्ट से चला जाऊँ, ऊपरली अदालतों में चला जाऊँ, मैनू स्टे मिल जाए ताकि मैं आराम नाल निश्चित होकर थले घूमदा। 2010 में जो सज्जन कुमार जी के खिलाफ चार्ज फ्रेम होया पालन विहार कॉलोनी केसा दे विच, फिर वो सुप्रीम कोर्ट आ गया और सुप्रीम कोर्ट में लीगल टीम ने बहुत मेहनत की, मुशक्कत करने तो बाद उन्होंने स्टे नहीं उत्थे लैन दिता गया। रादर एक डायरेक्शन कराई, उसकी पिटीशन डिसमिस कराई, यह डायरेक्शन दवाई गई कि बहुत जल्दी तो जल्दी जी थले ट्रायल कोर्ट है, निचली कोर्ट जी है वो मैटर्स ਨੂੰ खत्म करे, मैटर ਨੂੰ डिस्पोज ऑफ करे। जदों सुल्तानपुरी के केस में चार्ज फ्रेम हुए, अगेन ही केम टू सुप्रीम कोर्ट, उदों ही पूरी कोशिश की गई, उन्होंने स्टे नहीं लैन दिता गया। इन्हां सारे केसां का नतीजा होया जिहड़ी लीगल टीम लड़ती रही, जिहड़े साडे विटनेसेस साडे नाल खड़े रहे, ਉਹਦਾ नतीजा होया कि ਅਸੀਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ सब तो मेजर सक्सेस मिली कि सज्जन कुमार ਨੂੰ हाईकोर्ट ਤੋਂ कन्विक्शन हुई विद लाइफ इंप्रिजनमेंट। यह सफर सानू तय करने में इन्ना समा क्यों लगे? सब तो वड्डा जिहड़ा रीजन सीगा उस बंदे का पोलिटिकल क्लाउट। जदों इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीक्यूशन दो लिम्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तुहाडे नाल नहीं होंगे, then how you can get conviction, how you can get justice? इन्वेस्टिगेशन उन्हां दी, प्रोसीक्यूशन उन्हां दा। In between we were there,
and we were trying to fight it out कि जी सानू किसी तरह सानू सुनो सानू जस्टिस सुनो जब मास किलिंग के केसेस होते हैं कई बार तो डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला आज कोई प्रोवोकेटिव स्पीच दे के चला गया has created disharmony in the society. He has created enmity between the various factions of this society. You will not get direct evidence. You will not get direct evidence. 84 तो बाद immediately ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਗਿਆ they all were uprooted. ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ. They were so scared of it. All these big political persons, those who were involved there, पुलिस कहती है आप किसके खिलाफ दिखा रहे हो एफआईआर आप जान रहे हो किसके खिलाफ केस करना चाहते हो आप जिंदा नहीं रह पाओगे. People were so under so much of trauma. चले गए कोई पंजाब चला गया कोई किते चला गया जो एफआईआर दुनिया समझ गए उन्होंने एड्रेसेस ऊपर दे वर नॉट अवेलेबल. अद्धे तो ज्यादा केसेस से अनट्रेस क्लोज हो गए अद्धे केसां में चार्जशीटां फाइल नहीं हुई. 84 का जो साडा सफर स्टार्ट होया 85-86 डिफरेंट कमीशनस आई वॉच सरकार ने बैठाइयां कमीशनस बैठ गई डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस उन्होंने की बट अल्टीमेटली सानू कोई कंक्रीट रिजल्ट किते नहीं मिला. 84 को लेके 2000 तक इवन कुछ ट्रायल्स जिहड़ियां चलियां उहदे च उन्होंने एक्विटल मिल गई. 2000 ਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਕਾਮਰਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ 2000 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ. ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅਨਟ੍ਰੇਸਡ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰੀਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲੀ. ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ ਪੈਂਡਿੰਗ. अपील सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट कर ली बेल ग्रांट नहीं हुई 3-4 हीरिंग ते सुप्रीम कोर्ट ने ट्राई किया सज्जन कुमार को मैंने बेल मिली. लास्ट टाइम उन्होंने लॉयर ने कहा कि जी ही इज नॉट मेडिकली फिट कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग मेडिकल बोर्ड किया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दा तुसी जाओ एंड ट्राई टू नो अबाउट हिज हेल्थ तो दी हेल्थ की पोजीशन की वो रिपोर्ट आएगी उस तो दोबारा बेल दी एप्लीकेशन से बहस होएगी. मेन उसकी अपील जी है नेक्स्ट मे वास्ते सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट कर दी फॉर हियरिंग. की औकड़ सानू इस दौरान पेश करनियां पईयां. सुप्रीम जदों सीबीआई के अफसर गए अरेस्ट करने वास्ते सज्जन कुमार कमाल की गल देखो सीबीआई के अफसर हॉस्टेज बना लिया गया. लार्ज क्राउड वाज देयर आउटसाइड हिज हाउस देयर व्हीकल्स वर बर्न्ड. कितनी औखी लड़ाई सी. सीबीआई के अफसरों तक को बंदी बना लिया जिस बंदे के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई जिस बंदे के खिलाफ पुलिस एक्शन लैके तैयार नहीं सी. ਇਹ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ. ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਅਸ ਦੈਟ ਥਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰੇ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਸਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਈਏ. ਬਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਫੋਰਮ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਵਾਟ ਆਰ our going to be our grounds there because ultimate our endeavor would be कि condition will be sustained there so that at least our people are at peace and we should get justice. 186 केस ऐसे ने जेडे अनट्रेस्ड होए जेडे एसआईटी ने को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा री इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन दी. 186 केस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट की थी जेडी इन्वेस्टिगेट कर रही है. ऐसे केसेस ने दिल्ली कैंट के बारे जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा दसना चाहूँगा जी हुण कन्विक्शन हुई है सज्जन कुमार की दैट वाज पर्टेनिंग टू हिज रोल इन किलिंग्स इन दिल्ली कैंट एरिया. 341 बंदे सिर्फ दिल्ली कैंट दैट इज वन पार्ट ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी जिस 341 बंदे 21 एफआईआर दर्ज और 22 कंप्लेंट ऐसियां ने जिहड़े एक एफआईआर के नाल क्लब कर दित्तियां ने. यदि इस तरह होता है कि मर्डर के केसेस हो किलिंग्स के केसेस हो और 22 केसेस नाल एक एफआईआर के क्लब कर दिते जाए. That was the kind of clout which he was enjoying at that point of time. So ultimately we are pursuing that cases in Supreme Court and we will with due diligence ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਟ ਆਊਟ ਕਰੀਏ so that his conviction is sustained. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਮਨਾ ਜੀ Chhabra sahab, I request Carnage. She's another very jubilant
थे जिन्होंने के नाना वाली क्वेश्चन तो पहले ही ये काम शुरू किया सी नाना क्वेश्चन तो बाद जिन्होंने काम किया with dedication and passion. You can hear from her some of the salient points. Thank you, sir. Vaheguru Ji Ka Khalsa. I got a golden and excellent opportunity when Mr. Fulka, our senior advocate, and whom I call the backbone of 1984 cases. Without him, the cases will crumble. It gives me a spine-chilling thought to relive the agony and traumatic experiences which were shared by the victims with me when I got associated with them in the year 2000. Each victim, the widows, their daughters, they were coming to us, relating their harrowing experiences, which I must say that it was not a story, it was a fact, which they had lived for harrowing 7 days, starting from 31st October 1984 to 7th of November 1984, when they were unfortunate enough to see the massacre of their parents, of the children, of their sons, of their brothers, all the male members of their families were being wiped out one by one, and not only in one area but throughout Delhi. And you can't blame me if I am becoming emotional to rethink and think, because I am living it since the past 19 years. But I must assure you that I give them enough strength to come out of that traumatic experience. Because we are standing as pillars of strength with them. And I assure you, till my last breath, I will be living and ensuring justice for them. It was 31st October 1984 when Mrs. Indira Gandhi was assassinated. And in the evening there were sporadic incidents in Delhi around AIMS where she was taken for her medical emergency. When Gyani Zail Singh's motorcade was also stoned. So that was the first symptom which came, that what was lurking for another week or so. The Ranganath Mishra Commission was established and constituted in the year 1984 itself. Thereafter, 3 committees were formed in February 1987. That is Kapoor Mittal Committee to look into the conduct of Delhi police, whether they were conniving with the rioters who were roaming freely on the streets, on the roads, killing the people of one community one by one, entering into their houses. They had a list of the voters list. They could identify the
houses which were owned and inhabited by the Sikh families. They were being pulled out, and I am a witness to one of the incidents myself. In 1984, on 1st November, it was 11 o'clock, and I must share it with you. Since we are also celebrating 550th anniversary, birth anniversary of Gurudev Baba Nanak Dev Ji. I was living in house number 16. A Sikh family was living in house number 18. So this is an experience which I have lived. And whenever I go abroad to address the Sikh community on the pendency of these cases, I always share this experience. So I must share this with you as well. It was 1st November at about 11:30. I was at home with my family, and in house number 18, just one house in between, 16 and 18 is one house, 17. 18, I got, there was a huge mob which was attacking house number 18. And there were big shouts and मारो मारो सिखों को मारो, इन्होंने हमारी माँ को मार दिया है, कोई बच्चा ना बचने पाए, ये सांप. All these slogans were being shouting, and I could see the police also following them only with the dandas in their hand, as if they were allowing them a free hand. They barged into the house, and before that, when I entered I just stepped outside the gully. I barged into their house single-handedly, and from their back door pulled them out and asked them to go to my house, locked my door from outside, and went in house number 18. About 70 to 80 persons, all unruly mob. Their father had a sports goods shop, and they started looting those goods from there. They started throwing all the utensils, everything, and I just entered there. Like you all are sitting here, and I just entered here and I said, "आप लोग क्या कर रहे हो?" He said, दीदी ये आपका घर है? I said, हाँ. दीदी हमको माफ कर दीजिए. We are very sorry. They all went out, and I was standing stupefied, all alone, standing there. What had happened? What did I see? I looked at the back all around and saw Guru Nanak Dev Ji's calendar there. And he was doing like this. What was this? As if Guruji had come to protect his people and as well as for myself. I did not for a moment think about the consequences. What will happen to me? I just stood there. And that day I said, because I did not know what is lurking way ahead. Some more traumatic experiences. This was total chaotic situation. The mobs were ruling Delhi at that time. That day I promised myself I had to get justice for the victims whosoever has been subjected to this traumatic experience. And in 2000, I got this golden opportunity to be associated with Fulkaji, whom I called, "Sir, you are the backbone. And without a backbone, one can't stand."